family, namaste and good evening to each and every one of you. In the Indian tradition, we respectfully describe all our guests as atithis. Atithi Devo Bhava. It means guests are like gods. When I did namaste to you, it meant that the divine in me is pleased to acknowledge the divine in you. आप सब ने इस शादी के माहौल को मंगलमय बना दिया है. धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद. Friends and family, as Anant and Radhika embark on a journey of lifelong partnership, your blessings will yield a perennial harvest of good fortune whose abundance will never diminish. Today, my father, Dhirubhai, is also showering his profuse blessings from high up in the heavens. I'm sure he's doubly happy because we are celebrating this joyous day in the life of his favorite grandson, Anant, in Jamnagar. Jamnagar became the Karm Bhumi for my father and me, a place where we found our mission, passion and purpose. Jamnagar was a totally barren land. It was a desert 30 years ago. What you see now is the realization of Dhirubhai's dream. Jamnagar became the turning point in the history of Reliance. It continues to be a place where we launch futuristic businesses and unique philanthropic initiatives. Our sole aim is to enhance India's prosperity and contribute to the well-being of planet and all its people. In all humility, I say that Jamnagar will give you a glimpse of the rise of a new India that is vibrant, optimistic, and full of self-confidence. Friends, let me now say a few words about Anant and Radhika. Anant in Sanskrit means that which has no end. It means infinite. And I see infinite potential in Anant. मैं अनंत में अनंत शक्ति देखता हूँ. Whenever I see Anant, I see my father Dhirubhai in him. His same can do, will do, nothing is impossible attitude. And in Radhika, he has found an ideal life partner. She is a reservoir of immense creative energy. She is a quiet fountain of love and care. Quite aptly, Radhika has the name of Lord Krishna's favorite consort, Radhika and Anant. Anant and Radhika, ये तो रब ने बना दी जोड़ी है. Our dear guests, friends and family, finally remember that 3 days of exciting and unforgettable festivities await all of you. Neeta has conceptualized each one of them. She has single-handedly put them all together by working tirelessly for several months with her eye for detail, with her focus on aesthetics, and with her passion for perfection. Even I don't know, after 4 decades of being her life partner, where she gets this limitless energy from. I can only guess that she gets it from her devotion to Ma Amba and her infinite love for her children. Therefore, I ask all of you to sing, dance, and immerse yourself in each of these festivities. Become young at heart again, and I am going to try hard. Warmest welcome to Jamnagar. For us, each and every one of you is a VIP, and let the celebrations begin. Warm welcome.
Mama, that all this is created by my mother and no one else. And my mother has gone all out for the last 4 months. She's worked for, I think, 18, 19 hours a day. And I'm extremely grateful to Mama, and thank you so much. I would like to thank each and every one of you present here. I know everyone has made it to Jamnagar to make me and Radhika feel special. We are all honored and humbled to have all of you here. I am sorry if we have caused any inconvenience to anyone. Please do forgive us, both the families. So I hope everyone is going to enjoy the coming 3 days, and I would just like to thank my mother, my father, my sister, and my brother, my sister-in-law, brother-in-law, for making this event so memorable for me and Radhika. I think my family has gone all out to make us feel special. Everyone has been sleeping for less than 3 hours a day for the last 2-3 months, and it's extremely I'm so happy that I can share this joy with everyone out here. I really don't have words to express my gratitude. As many of you know, my life has not always been entirely a bed of roses. I've also experienced the pain of thorns. I've faced many health crises since childhood, but my father and mother have never let me feel that I've suffered. My father and mother have always stood by me, and my father and mother have always made me feel that if I can think, I'll do it. And I think that is what my father and mother mean to me, and I am eternally grateful. Now I'll come to Radhika. I'm 100% the lucky one. There's no doubt about that. I also don't know how I got Radhika. So I am definitely the most luckiest here. Radhika has been, for the last 7 years, it feels like I met Radhika yesterday. But every day I fall more and more in love. Like my brother-in-law says, that when he used to see my sister, he had volcanoes and fountains going up in his heart. I would say I have earthquakes and tsunamis going in my heart when I see Radhika. So thank you, Radhika, for everything. Viren uncle, Shaila auntie, Anjali Aman, thank you for welcoming me into your family with open arms. I am extremely, extremely thankful and grateful for having the patience for the last 7 years. Finally, the day is coming. And thank you, Aman. Thank you. I would like to take blessings from my grandmom, Kokila Mummy. So, as my mom, I think my mom said it, but Kokila Mummy comes from Jamnagar. And Kokila Mummy has been a big inspiration. My grandmother has been a big inspiration to me. I always take motivation. My grandfather, wherever he is, he'll be blessing me. My Nani has taught me how to be religious. She's a Nagar Brahmin. Very proudly, she tells me that I'm a Nagar Brahmin. So she teaches me everything I've stayed mostly with my Nani when I was young. So she taught me everything. And I have Radhika's Nani here. Radhika's Nana is blessing us from top. My Nana is also blessing us from top. I'm sure they'll all be extremely happy. And over the next 2 days, you're going to see a small part of Vantara, I think tomorrow and day after. I hope it's as magical for all of you as it is for us. Vantara has been my passion for we started the first rescue center, I think, in 2008 when I was, 10, 12 years old. And it's been only possible because of my parents and my family's support. My mother and my father have always... आप लोगों ने बहुत सारा डांस देख चुके हैं. The brothers have danced, the sisters have danced. भाई बहन, चाचा चाची, ताया ताई, मामा मामी, मासा मासी, अंकल आंटी, हीरो हीरोइन, जीजा साली, जेठ जेठानी, जीजा साला, देवर देवरानी, भैया भाभी, फूफा भाभी, सारा जमाना है everybody. Last night तो सेक्सी गाना, कितना डांस किया सबने, बहुत मजा आया. लेकिन ये हम साथ साथ जो नाच है, जो प्रेम है, ये बिना दुआओं के, बिना प्रेयर्स के आगे नहीं बढ़ता है. So let me take a moment to introduce you all to the Powerpuff Girls of the Ambani family, the three Murti, or the three Devya of the family, the Saraswati, the Lakshmi, and Parvati.
Their prayers and blessings have kept this family together. They have been telling stories, keeping this culture in the family going ahead. The auspiciousness, the wealth, the fortune, and also have kept the legacy of the Ambanis thriving with their stories and the guiding hand and advice. Of course, they will continue to do so for generations to come. So here's handing it over to the three grand old dames of the Ambani family, giving the wishes to Radhika and Anand. Please welcome on screen, because it's very cold, I'm not calling all the ladies on stage. The Powerpuff Girls, the Spice Girls of Jamnagar. Not Charlie's Angel. The Ambanis Angels. Srimati Kokilaben Dhirubhai Ambani, Mrs. Purnima Dalalji, and Mrs. Devyani Kimji, giving the blessings to Radhika and Anand. हद से हो रहा हो और 3 दिन तक चले। गेस्ट लिस्ट ऐसी कि हर कोई देखकर दंग रह जाए। सही पहचाने हैं। शादी का फंक्शन है मुकेश अंबानी के परिवार का, जो पहले ही अपनी ग्रैंड शादियों के लिए जाना जाता है, जिनकी शादियों में बड़े बड़े सितारे खाना परोसते हैं, विदेशी सेलिब्रिटीज ठुमके लगाते हैं। तो जब उनके लाडले छोटे बेटे की शादी होगी तो खास तो अपने आप बन ही जाए। अंबानी परिवार ने अपने आंख के तारे की शादी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। पूरे देश की नजर इस शादी पर टिकी है। शादी तो जुलाई में होगी, लेकिन आज से जामनगर में शादी के फंक्शन शुरू हो रहे हैं। इस शाही शादी की हर एक चीज खास है, चाहे वो वेन्यू हो या फिर मेन्यू। सबसे पहले बात करेंगे प्री वेडिंग फंक्शन के डेस्टिनेशन की। क्यों अंबानी परिवार मुंबई छोड़कर गुजरात के जामनगर में यह फंक्शन कर रहा है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनंत की दादी का जन्म जामनगर में हुआ था। दादा धीरू भाई ने बिजनेस की शुरुआत जामनगर से की। अनंत को इस जगह से बेहद लगाव है। ये तो बात थी वेन्यू की। अब मेहमानों की पेट पूजा का इंतजाम देख लेते हैं। 3 दिन के प्री वेडिंग प्रोग्राम में खाने के इतने व्यंजन होंगे कि एक के बाद दूसरे का नंबर नहीं आएगा। मेहमानों के लिए मेन्यू में बेशुमार ऑप्शन होंगे। ये किसी भी मामले में शहंशाही दावत से कम रहने वाला नहीं है। मेन्यू में 2500 यानी 2500 डिशेस होंगी। नाश्ते के मेन्यू में 75 व्यंजन होंगे। डिनर में 275 डिशेस शामिल हैं। 3 दिनों में एक भी डिश रिपीट नहीं होगी। 65 शेफ की टीम इसे तैयार करेगी। मेहमानों को दिन में 4 बार भोजन कराया जाएगा। अनंत और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन की थीम का भी खुलासा हो गया है। 3 दिनों तक गेस्ट को एक थीम और ड्रेस कोड फॉलो करना है, जिसकी पूरी लिस्ट हमारे पास है। शादी के प्री वेडिंग फंक्शन यानी 1 मार्च पहला दिन होगा। आज की थीम एन इवनिंग एवरलैंड होगी। 2 मार्च यानी दूसरा दिन, थीम अ वॉक ऑन द वाइल्ड साइड। ड्रेस कोड जंगल फीवर रखा गया है। 3 मार्च यानी तीसरा दिन, तस्कर ट्रेल्स और हस्ताक्षर। भारतीय पोशाक पहनने के लिए कहा गया है। थीम, मेन्यू और वेन्यू की बात तो हो गई। अब बात सबसे अहम चीज की, जिससे शादी के फंक्शन की रौनक बढ़ती है, वो है मेहमान। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शरीक होने के लिए देश की दिग्गज हस्तियों के साथ ही विदेश से भी कई मेहमान आ गए, जिसकी बहुत लंबी लिस्ट है। मेहमानों के स्वागत के लिए खास तैयारी की गई है। एयरपोर्ट को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। अंबानी के सभी मेहमानों का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि मार्क जकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिलिया चैन का जामनगर एयरपोर्ट पर गुजराती रीति रिवाज से स्वागत किया गया, जिससे कपल काफी खुश नजर आए। प्री वेडिंग फंक्शन के गेस्ट की कई झलकियां सामने आई, जिनमें हॉलीवुड की मशहूर सिंगर रिहाना से लेकर बॉलीवुड के तमाम सितारे पहुंच चुके हैं। इस खास मौके के कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें मशहूर सिंगर रिहाना की टीम और इस प्री वेडिंग के लिए उनकी धमाकेदार तैयारियों की झलक दिख रही है। वहीं अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां भी इसका हिस्सा होंगी। करीना कपूर, जानवी कपूर, सलमान खान, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर समेत कई बॉलीवुड स्टार्स जामनगर पहुंच चुके हैं। अंबानी परिवार के मेहमान खास हैं, तो उनको तोहफे भी खास दिए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्री वेडिंग वैश के लिए नीता अंबानी ने मेहमानों के लिए खास स्कार्फ तैयार कराए, जिसके लिए उन्होंने गुजरात की महिला कारीगरों के साथ सहयोग किया है। सजावट से लेकर दावत तक का हर इंतजाम स्पेशल है। लोगों की दिलचस्पी ये जानने में है कि आखिर अनंत और राधिका की प्री वेडिंग कार्यक्रमों की ड्रेस कैसी होगी, किसने उनकी ड्रेस डिजाइन की है। रिपोर्ट के मुताबिक प्री वेडिंग कार्यक्रमों की ड्रेस
इंडस्ट्री के चर्चित डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किए। इस प्री वेडिंग कार्यक्रम की शुरुआत आज से नहीं बल्कि 26 फरवरी से ही हो गई थी। पूर्व कार्यक्रमों की शुरुआत अन्न सेवा से हुई। जामनगर में रिलायंस टाउनशिप के पास जोगवड़ गांव में मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट सहित अंबानी परिवार के अन्य सदस्यों ने गांव वालों को पारंपरिक गुजराती खाना परोसा। राधिका की नानी और माता पिता वीरेन और शैला मर्चेंट ने भी अन्न सेवा में हिस्सा लिया। अंबानी परिवार में अन्न सेवा की पुरानी परंपरा है। शुभ अवसरों पर अंबानी परिवार अन्न सेवा करता रहा है। ये तो बात थी प्री वेडिंग फंक्शन की, लेकिन जो सभी के मन में बात है वो ये कि समारोह में कितना पैसा खर्च हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनंत राधिका की आलीशान शादी में सबसे ज्यादा खर्च होने वाला है। अनंत राधिका इस शादी के बाद इतिहास रच देंगे। मुकेश अंबानी अपने छोटे बेटे अनंत की शादी में पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। इसमें करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले हैं। अगर रिपोर्ट्स को सही माना जाए तो अनंत अंबानी की शादी परिवार के साथ देश की भी सबसे महंगी शादी हो जाए। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन की धूम गुजरात के जामनगर में है। इस सेरेमनी को एक जश्न की तरह मनाया जा रहा है, जहां शामिल होने के लिए दुनिया भर की मशहूर हस्तियां पहुंची हैं। प्री वेडिंग सेरेमनी में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान ने एक साथ डांस किया, तो वहीं दिलजीत दोसांझ ने भी अपनी परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। प्री वेडिंग सेरेमनी में एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देखने को मिली। पहले दिन रिहाना ने स्टेज परफॉर्मेंस दी, तो दूसरे दिन भी बी टाउन हसीनाओं ने अपने गानों से लोगों का दिल जीत लिया। दिलजीत का करीना कपूर के साथ भी एक वीडियो सामने आया, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। दिलजीत ने प्री वेडिंग में कई गाने गाए, उनके गानों पर बी टाउन हस्तियों ने परफॉर्मेंस दी। इसी में से एक वीडियो उनका करीना कपूर के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस को रिहाना बताया है। इसके बाद करीना ने उनके गाने पर कमर भी ठुमकाई। एक्ट्रेस ने ये स्टेज परफॉर्मेंस अपने पति सैफ अली खान के सामने दी। करीना के डांस से सैफ भी नजरें हटा नहीं पाए। दिलजीत और करीना की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई। किसी ने बेबो के डांस की तारीफ की, तो किसी को दिलजीत का उनके साथ मस्ती करना बेहद ही पसंद आया। इस फंक्शन में करीना ने शिमरी ब्लैकलेस साड़ी पहनी थी। डांस के अलावा उनका लुक भी काफी सुर्खियों में रहा। इसके अलावा दिलजीत ने रिलायंस इंडस्ट्री की चेयरमैन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी का भी दिल जीत लिया। एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिलजीत और नीता अंबानी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में नीता को गुजराती में दिलजीत से सवाल पूछते हुए देखा जा सकता है। वो इसका जवाब भी देते हैं। हालांकि नीता अंबानी के दूसरे सवाल पर दिलजीत दोसांझ अटक जाते हैं। फिर नीता अंबानी के आसपास खड़ी महिलाएं ट्रांसलेट करके दिलजीत को बताती हैं, जिसका वो ऐसा जवाब देते हैं कि नीता समेत सभी महिलाएं खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। ये वाकया उस वक्त होता है
है जब दिलजीत स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं और नीता सबसे आगे की तरफ खड़ी उनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रही होती हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि दिलजीत दोसांझ मंच पर खड़े हैं जबकि नीता अंबानी उनके सामने नीचे खड़ी हैं। नीता दिलजीत से गुजराती में पूछती हैं गेम शो। दिलजीत कहते हैं मजा मा। ये सुनकर सब खुश होते हैं। फिर नीता दूसरा सवाल भी गुजराती में पूछती हैं जो दिलजीत को समझ नहीं आता। फिर एक महिला उन्हें समझाती है। इस पर दिलजीत दोसांझ कहते हैं मैं लोगों के दिलों में रहता हूँ। ये सुनकर नीता अंबानी समेत आसपास मौजूद सभी महिलाएं हंसने लगती हैं और चीयर करती हैं। नीता का गुजराती अंदाज फैंस को भी भा रहा है। उनकी इस गुजराती क्लास को देखकर हर कोई तारीफ कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में Good evening. Thank you so much for being here. Like Anand said, we are extremely humbled that you have all made it from around the world to come to our home. Thank you so much again from me, Anant, and both our families. When Anant and I decided to get married, the one place we wanted to celebrate was Jamnagar, really within our hearts. The hard work of our families and the dedication the Neeta auntie has to making all of our dreams a reality has made this possible. We have been extremely indulged. I have seen all the events with all of you for the first time today. I had no idea what was going to happen. I was so surprised when I walked in. People are asking me, is that normal? I said, it's normal if you have a mother-in-law like Neeta auntie. So, thank you so much for doing this for us and letting us enjoy the process of our wedding. Anant and I are so lucky to have some of the most amazing women on this earth as our influences. Neeta auntie, who will move heaven and earth for her children. Isha, who is our most fierce protector. Shloka, you are the kindest person and I would be completely lost without you. Anjali, you are the force behind anything good that I have in me. Mama, you are our safe place. You've taught us how to be our most authentic selves, and you've taught us to find a silver cloud behind any grey. You've taught us to find a silver lining behind any grey cloud, and thank you so much for that. The men in our family are special too. I didn't forget about you guys. Papa, you are the most encouraging man I know. You have built the confidence of the three women around you with the utmost love and care. The example you have set as a father and a husband has shaped my life in so many ways you will never know. My brothers, Anand, Aku and Aman, you bring so much laughter into our lives. You are our true kings of comedy. But at the same time, you are our most dependable allies. I love you three so much. And Mukesh uncle,
You have been a father figure in my life from very early on in our relationship. And I truly hope for everybody that they have a champion for their relationship like you have been a champion for ours. For Anant and me, Jamnagar is where our heart is. This is where we grew up, where we became friends, where we fell in love, and where we built our relationship. Now, as we begin our future together, we will be doing it here, and we are so thankful that you get to see the beginning of it. This place has become part of our fondest memories, our deepest secrets, our loudest laughs, and the happiest times that we've had together as a family. It's seen us go through all our ups and downs. In March of 2020, Anant and I got locked down here and we couldn't go back to see our family for months. Although it was hard to stay away, we learned to appreciate the small joys of life. But in Jamnagar and with Anant, the small joys are once-in-a-lifetime experiences. One day, we got a call saying one of our rescued elephants was giving birth. Since she was brought up in captivity, she was extremely stressed by the process. I watched as Anand stood there with her Mavat through an 8-hour labor process, patting her down through it and calmly talking to her. Now we have a beautiful baby Hanuman who is almost 4 years old and as naughty as ever. People ask me, when did Anand start Vantara? I don't think there's any start date. It's always just been in his heart. He has been able to formalize this institution more and more over the years. I've had the privilege of watching Anant and his team pour their hearts and souls into making this vision a reality. Anant, I will never be able to express how proud I am of you. Someone once told me, what do you really find when you find a partner? What you really find is somebody to witness your life. There are over 1 billion people on this earth, and what does one life really mean? But when you find somebody to promise you to care about everything. The good, the bad, the beautiful, the bold, the sad, the mundane. You say, I will see you every day. Your life will not go unnoticed because I will notice it. Your life will not go unwitnessed because I will witness it. And Anand, I'm so blessed to be a witness to your beautiful life. Anant and I are so lucky to be able to share this place so close to our heart with you all. Jamnagar is not just an example of how expansive Indian industry can be. It's an example of how expansive a human heart can be. Anand's grandfather, Shri Dhirubhai Ambani, dreamt of opening the world's largest township here, the world's largest refinery here. Mukesh uncle executed this dream with precision, and Neeta auntie built a vibrant township and a green belt which was once barren land. This gave Anand the world's greatest canvas to fulfill his passions. 3 generations of our family have worked together and dedicated themselves to Jamnagar, and we feel so humbled to be able to share it with you all today. Thank you once again for being a part of our celebrations. I hope that the grace and the beauty and the magic of Vantara touches your hearts like it has ours. To dream. So I dreamt and then I made it a reality. So today it's, tomorrow you'll see I don't want to talk much about it. I want you all to experience it. And thank you. I know that we've already prolonged the show time, so I don't want to talk more. I'm going to make my better half speak on my behalf. Loudest laughs and the happiest times that we've had together as a family. So I dreamt and then I made it a reality. I don't want to talk much about it. I want to half speak on my behalf. So I am definitely the most
Ahead, the auspiciousness, the wealth, the fortune, and also have kept the legacy of the Ambani Ambani की पत्नी नीता अंबानी का भी दिल जीत लिया. मेहमानों के स्वागत के लिए खास तैयारी की गई है. एयरपोर्ट को खूबसूरत